Very good afternoon to all. Shri P.P. Pandey, Joint Secretary, Department of Justice. Shri Jasbir Singh Bajaj from Legal Intellects, New Delhi. Ms. Sunita Suman from Legal Intellects. Dr. Ruby Makhija, Chairperson of Local Complaint Committee, District South Delhi, Government of India, Government of Delhi. Ms. Anvita Sinha, Director, Department of Justice. Nyabandhu Advocates, my colleagues from Department of Justice, other distinguished lawyers, invitees, dignitaries, the village level entrepreneurs and paralegal volunteers who are connected with us online. I extend my warm greetings to you all today for this very important webinar on the topic Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. As you all know, the Department of Justice has formulated a scheme titled Disha, that is Designing Innovative Solutions and Holistic Access to Justice for the period 2021 to 2026. And prior to this scheme, Department of Justice Access to Justice Division was running 4 programs, mainly telelaw, which is provides pre-litigation advice to the citizens through the mode of technology, that is telephone or video conferencing facilities, in collaboration with the common service centers. Nyabandhu, which is our aim to enroll advocates as a pro bono legal services. The Nyamitra, which aims to address the issue of pendency of cases. Nyamitra is mainly associated with the district courts for reducing the cases which are more than 10 years old. And legal literacy. This legal literacy and awareness program was earlier running mainly in the northeastern states and UT of Jammu and Kashmir. But now with Disha in place, we are expanding it to pan-India level, and all the programs are now running all over the country. Again, within the ambit of legal literacy and legal awareness, starting from September onwards, we are conducting at least one webinar every month on various topics covering the social legal issues. And so far, we have organized webinars on the topics of Protection of Women from Domestic Violence Act, child rights issues, fundamental duties, and on the Preconception and Prenatal Diagnostic Technique PCPNDT Act till December. And with the aim of today's webinar, we all know, is to raise participants' legal awareness on the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act and its impact on women and girls. Mainly the aim of webinar is to give a brief information about what are the contents of the act, the background, the salient features, how it is implemented, what are the methods of grievance redressal, lodging of complaints. So with the experts which we have today with all of us, amongst all of us, our PLVs, VLEs and panel lawyers, those are mainly associated with the telelaw program, will be benefited through the efforts which we make today. So starting the webinar, the first speaker, I would like to invite Ms. Anvita Sinha. Ms. Anvita Sinha is Director in Department of Justice, handling the portfolio of director appointments. She is 2003 Officer of Indian Personal Service. Indian Railway Personal Service, and working with department for almost a year. Yes. I welcome Ms. Anvita. Thank you, sir. A very good morning, respected seniors and all our esteemed guests who have joined in this webinar. It's really a privilege for me to be speaking on one of the most important enactments of our times, that is the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Now, since this is a social legal awareness program, I thought that, of course, my esteemed co-panelists will be going into the details of the provisions of the act. I thought I would like to go a bit into the background कि इस act की क्यों जरूरत है हमारी country में और इस तरह के similar enactments हैं worldwide, and how our society is placed today and how important it is to have a safe working environment for the women. Next slide, please. So going into the background, आज के दिन में हमें एक चीज समझना है कि जो हमारी women workforce है वो large numbers में enter कर रही है क्योंकि अब they have more access to education, employment, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हें एक safe और secure working environment दें.
इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसको हम सेंसिटाइज करें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ वुमेन and end any kind of gender stereotypes that may exist. इससे क्या होगा कि ना ही सिर्फ एक जेंडर इक्वालिटी आएगी, but it will be an inclusive growth because it is only when the employee is comfortable at her workplace, she will be able to give best results. It will be good for the organization, for the society, और हमारी country के लिए भी as a whole. Next, please. सो इसी इन्हीं लाइंस पे इस एक्ट का प्रियम्बल है जो कि ये कहता है कि हम इस एक्ट के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करेंगे एंड इफ एट ऑल सच अनटोवर्ड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स टेक प्लेस, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसके बारे में इस एक्ट में लिखा हुआ है. जब भी किसी वुमन की इस राइट का वायलेशन होता है, सो एक्चुअली इट इज अ वायलेशन ऑफ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि एक लेडी को दी गई हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी है अंडर 14-15, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 विच गिव्स यू अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, और आर्टिकल 19 का भी इन्फ्रिंजमेंट है बिकॉज दैट गिव्स यू द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन. सो दिस राइट इसको नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. सो हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस राइट को हमने नेशनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम बंधे हुए हैं, उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी टेक द नेसेसरी स्टेप्स. नेक्स्ट प्लीज. So I will slightly like to go into the social aspects कि क्यों ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं वो वर्क प्लेसेस में हो रहे हैं, जिसका एक वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट वी आर बाय एंड लार्ज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और ये मान लिया गया है, एक धारणा है कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, या वायलेंस इज ओके, या इतना इतना हार्मफुल नहीं है, ये एक नेचुरल टाइप का मेल बिहेवियर है, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग चलती है और देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट. बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट नॉट ओनली लीड्स टू पुअर प्रोडक्टिविटी बल्कि बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है द वुमन एंड हर फैमिली एंड द ऑर्गेनाइजेशन शी इज वर्किंग इन. नेक्स्ट प्लीज. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि दो ये केसेस बहुत तादाद में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज जो है वो इन मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसकी वजह से उनका हैरेसमेंट बढ़ सकता है, मे बी शी मे लूज हर जॉब, उनके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है, उनके रेपुटेशन को एक प्रॉब्लम आती है. सो दे फील कि शायद इसके बारे में कुछ ना ही बोला जाए तो अच्छा है, या कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अरे ये तो पर्सनल मैटर है, इसको क्यों फॉर्मली रेज किया जाए. ये सब चीजों के चलते क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं एंड नोबडी रिपोर्ट्स अबाउट देम, जिसकी वजह से द वुमन सफर्स नॉट ओनली हर on account of her mental health, physical health. She may have to leave her job, she may not be able to perform to the best of her ability, जिसकी वजह से जिसकी अपनी economic and social costs हैं. So then we need to attack it from both the sides, that is change in the attitude and also bring in some kind of legislations जो इस तरीके के behavior को tackle कर सके. Next please. So therefore this act has been brought जिसमें कि ये इंश्योर करा जा रहा है कि जो वर्किंग स्पेस है वुमेन की वो उनके लिए सेफ हो और उनकी जो राइट है ऑफ इक्वालिटी वो उनको गारंटी करी जाए. सो सिंस दिस एक्ट इज इन प्लेस, ये जरूरी है कि सभी लोग इस एक्ट के बारे में जाने, हर महिला जाने कि अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, शी हैज अ प्लेस वेयर शी कैन गो फाइल अ कंप्लेन एंड गेट सम काइंड ऑफ रिड्रेसल टू दैट कंप्लेन. And as I said earlier also, that two-pronged approach is required. One, change in the mindsets, and secondly, in case of such unfortunate incidents, the matter is really taken up seriously by the authorities. So next please. Now हम में से ज्यादातर लोग आई थिंक भवरी देवी केस के बारे में जानते होंगे, जो कि एक साथिन थी राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, एंड शी वाज वर्किंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, एंड अनफॉर्चुनेटली शी वाज अ विक्टिम ऑफ रेप हरसेल्फ. और उसके बाद विशाखा वर्सेस
स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसको एक फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का इन्फ्रिंजमेंट माना अगर किसी लेडी का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और इसको एक फॉर्मल गाइडलाइंस इशू करी जिसमें कि बताया, डिफाइन किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन की है जहां वो लेडी काम करती है कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करे, और ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ उसको रेमेडी दे, प्लस इंसिडेंट्स हो ही ना, मतलब दे शुड आल्सो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिवेंशन. So this redressal mechanism etc. was for the first time addressed in the case of Vishaka versus state of Rajasthan. Now as we come to the main act itself, actually my co-panelists will be going into the details of the act. Next slide please. But I will just try to give you an outline कि इस act का दायरा कितना बड़ा है. जैसे कि अगर हम इसमें जो अग्रीव वुमन है उसको उसकी डेफिनेशन में इट्स नॉट ओनली अ पर्सन जो कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई है. इट कैन बी एनीबडी, अ पर्सन वर्किंग ऑन टेम्पररी बेसिस, एड हॉक बेसिस, डेली वेजरस, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, दे कुड बी प्रोबेशनर्स, ट्रेनी, अप्रेंटिस, टू द एक्सटेंट कि ये एक्ट जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं ये भी इसके पर्व्यू में आती है. तो इस एक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, एंड आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी कि सभी लोग इस एक्ट के बारे में जानें, और अगर उनके साथ ऐसा कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है सो दे मस्ट रिपोर्ट. It is important not only for them but also for the other lady employees working in that organization. इसी तरह से वर्क, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसी तरह से वर्क प्लेस को भी बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है कि जो जिस भी वट एवर प्लेस अ पर्सन विजिट्स विच इज अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको भी वर्क प्लेस मानेंगे. और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, अगर वहां भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है दैट इज ऑल्सो वर्क प्लेस. सो इट्स कवरिंग बोथ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और क्योंकि हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है सो इस एक्ट में इस पूरे सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई है, so that the safe working environment is provided to each and every individual. Then next slide please. So now what is sexual harassment? That has been also exactly defined in this act, जिसको कि सुनीता मैम बाद में डिटेल में आप लोग से बात करेंगी. But just to give you a gist, that sexual harassment could be one or more of these unwelcome acts, which is physical contact or advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct. All these come under the definition of sexual harassment. So again इस एक्ट के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप लोग को डिटेल में आगे इस सेशन में बताया जाएगा, जिसमें कि इस तरीके की चीजें डिफाइंड हैं कि इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, जो कंप्लेंट कोई भी वुमन एम्प्लॉय देती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसने कंप्लेंट दी है उसकी राइट्स हैं उसको भी पता होना चाहिए कि पूरी प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है. सिमिलरली जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है उसकी भी राइट्स है दैट दैट पर्सन इज केप्ट इन द लूप एट ऑल टाइम्स, क्योंकि हियरिंग हैज टू बी गिवन टू बोथ ऑफ देम. इसी तरह से इस एक्ट में जो पूरा कंप्लेंट प्रोसेस है उसको डिटेल में दिया हुआ है. फिर कैसे कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस एंड वट एवर एविडेंस दे कलेक्ट उसके बेसिस पे अपनी फाइंडिंग्स बनाएगी, अपनी रिकमेंडेशंस देगी, एंड टाइम टू टाइम द कमिटी हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट. नाउ इन सच काइंड ऑफ केसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई ऐसा किसी महिला के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार होता है और वो उसके बारे में कंप्लेंट करती है तो उसको जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन इंसिडेंट्स को ढीला छोड़ दिया जाए तो दैट जस्ट लूजेस इट्स रेलेवेंस अगर हम उसकी बात को सुन के उसको न्याय जल्दी ना दे सके. तो इसीलिए इस एक्ट में सर्टेन टाइमलाइंस भी डिफाइन कर दी हैं, जैसे कि कंप्लेनेंट को विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट कंप्लेन करनी चाहिए. उसके बाद जब कंप्लेंट आ गई तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसको हम 7 दिन में बताएंगे. कमिटी 3 महीने के अंदर अपनी इंक्वायरी पूरी करेगी, उसके 10 दिन के अंदर दे शुड सबमिट देयर रिपोर्ट. उसके बाद जो कमिटी है वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस दे सकती है, नॉट ओनली अबाउट द कंप्लेंट बट इन जनरल ऑल्सो, एंड दे कैन फाइन, दे कैन इम्पोज फाइन्स, बहुत सारी राइट्स हैं.
सो ये सब भी इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान है कि 60 days में किया जाए. And they have left it open ended कि if either of the parties are not satisfied with the findings of the committee, then there is a provision for appeal also, that within a period of 90 days the person should go in appeal. Next slide please. So now this is the last slide of my presentation, but I'll still say is one of the most important ones कि even at the cost of repetition मैं ये बोलूँगी कि जब भी any lady comes out with a complaint like this, प्लीज अंडरस्टैंड कि इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है. तो जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है उसको सीरियसली लेना चाहिए. जस्ट ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए ये सोच के कि अरे ये तो छोटा सा इंसिडेंट है, ये तो इसका पर्सनल मैटर है, व्हाई शुड द एडमिनिस्ट्रेशन गेट इन्वॉल्व. ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. देयर इज अ सिचुएशन कि हो सकता है कि कोई कंप्लेंट प्रूव ना हो पाए, दैट्स अनदर थिंग, बट दैट डजंट मीन कि वो कंप्लेंट ही फॉल्स थी, because certain times you may not find sufficient evidence or prima facie evidence, or you may not have people willing to come out open as witnesses. So that does not make the complaint a false and a malicious one. लेकिन इसी के साथ एक और बात भी है कि ये भी देखा गया है कुछ केसेस में कि एक्चुअली दिस एक्ट इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो, कि आपको कोर्ट्स किसी और बात पे सेटल करने हैं एंड यू कम एंड फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट. तो इस एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरीके की कोई फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट करता है तो उस लेडी एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी एक्शन ये कमिटी रेकमेंड कर सकती है. एंड देयर आर प्रोविजंस इन द सर्विस रूल्स, so the lady employee can also be taken up under this particular act. So it is important that both men and women behave responsibly, respect each other. एक वो respect जो हर individual को एक दूसरे individual की करनी चाहिए, irrespective of the fact कि कोई male है या female है. एंड इट इज ओनली देन कि सब एक अच्छे एनवायरनमेंट में ऑफिस में काम कर सकते हैं, वर्क प्लेस में काम कर सकते हैं, जिससे ना ही सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इंडिविजुअल्स की, बट अब उनके इंस्टीट्यूशन की, उनके ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी एज अ होल प्रोग्रेसेस, and of course nation building not to say. So with this I come to the end of my presentation, and I hope I am able to मैं अपनी बात जो जितने लोग वेबिनार में जुड़े हैं उन तक अपनी बात को पहुंचा पाई और उन्हें इस बात को समझा पाई कि yes there does exist a legal provision, एक हमारा एक्ट है इन प्लेस जिसके तहत किसी को भी अगर इस तरीके के बिहेवियर से गुजरना पड़ता है, दे आर नॉट अलोन इन देयर फाइट एंड देयर आर रेगुलेशंस एग्जिस्टिंग जिसमें उनको रेमेडी मिल सकती है. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you very much, Amrita ji. Your presentation was very well, has very well explained the background and the salient features, including the definition of the act as well as the provisions and the various ambit it covers. Basically, the workplace, which slide of yours clearly gives the information about who who can be considered, which is covered under the act, because normally people feel that less than 10 people if are working in a workplace, then the provisions of the act may not be applicable. So it was a very well presented presentation on the background. Now I invite Ms. Sunita Suman from Legal Intellects. She is a highly acclaimed and well-recognized expert and trainer on the subject. She has been instrumental in not only conducting training workshops on the Act for a number of organizations, including many Government of India public sector undertakings, but she is also an expert member of Internal Complaints Committee of CGHS North Zone. She is also one of the first experts in this field to have developed an online training platform, the first of its kind in India. So, Madam, I welcome you for the topic, which is prevention, prohibition, and redressal of the Act. Thank Welcome. you, sir. Thank you so much. First of all, good morning, everyone. Those who are physically present here and who have joined through online webinar. So I'm Sunita Suman, Advocate Sunita Suman, and first of all, I would like to use this opportunity to thank Department of Justice for giving us this opportunity to present my views and the information and knowledge that I have gathered to share with you all. So
I would like to welcome Mr. Parvesh Pandey sir, Shailesh Shrivastava sir, Anvita ma'am, who has just before me, she has given a very well drafted presentation on the overview of this act. तो ये act की जरूरत क्यों पड़ी हमें? Because before this we were already having the Vishakha guidelines. So Vishakha guidelines were already given by the Supreme Court of India, and you all well know that the guidelines of Supreme Court has the power of law as well. So what was the need of this act, that after so many years, the Vishakha happened in 1997, and in 2013 December we had this law. तो इतने सालों के बाद हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस में दो the provisions all provisions were already there, but the prevention and prohibition and the penal the provisions were lacking there. So the duty that was cast on the employer, that was already in the Vishakha. So for the first time it was felt that the working women, they are exposed to this kind of everyday harassment and violence at their workplaces. तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या बात करें, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो और भी ज्यादा बुरा हाल था, बिकॉज भंवरी देवी वाज ए साथ इन द रिमोट एरिया ऑफ जयपुर, आप सभी जानते हैं. सो आई ऑलरेडी आई ऑलवेज वेन एवर आई डू दिस काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, तो उनके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा मतलब प्राउड भी फील होता है, और मैं उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी होती हूँ, बिकॉज ऑफ हर स्ट्रगल. एंड उसके बाद हम लोगों को ये एक्ट मिला, जिसके बाद वर्किंग विमेन चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करती है. तो सबसे पहले, बिकॉज मैम हैज ऑलरेडी गिवन ए ओवरव्यू दैट, हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है. इस टर्म को हमने सुना तो बहुत बार है, और हमारे मन के अंदर एक आइडिया भी होगा कि क्या होता है, पर उसके अलावा हम एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So first of all, there is a brief introduction of my company, that is Legal Intellects LLP. We are the first one to get empaneled, one of the first law firms that was empaneled with the Ministry of Child and Development, that is a nodal ministry for this. And of course we are skilled, authorized and recognized, and we are associated with different NGOs as well as educational institutes for imparting these kind of trainings. Next please. These are some of the associations. Next please. Government as well as PSUs as well as private sector organizations. So, and here I would like to share that we have done a program for the entire Delhi police, and that was physical program, the physical kind of workshop that was attended by DCPs and above rank officers, and the online was there on their app called Nippon. Next please. And the same kind of we have done with the Sikkim police also. So these are some of the glimpses of whatever we have done till now. Next please. Yeah, this is the definition of sexual harassment that is defined in section 2N. The first one is unwelcome. Like sexual harassment is a behavior that is unwelcome. Now, what is a unwelcome behavior? हम सभी जानते हैं कि welcome क्या होता है. Welcome is always reciprocal. आपको पता चल जाता है कि आपका जो व्यवहार है, when आप किसी को भी कोई compliment देते हैं या कोई बातचीत करते हैं, initiate करते हैं किसी भी तरह की, आपको पता होता है कि जो welcome है, gesture आपका, वो होता है हमेशा रेसिप्रोकल, और वो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, दैट मेक्स यू हैप्पी. वो कभी भी डिमीनिंग नहीं होता है अनवेलकम की तरह, कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं करता है. तो अगर आप इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी भी अपनी फीमेल कोलीग को अगर आप बार बार डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं, मे बी कॉफी के लिए इनवाइट कर रहे हैं, एंड व्हेन शी इज टर्निंग डाउन दैट बट शी इज नॉट एंग्री, और शी इज नॉट एक्सप्रेसिंग एनी काइंड ऑफ एग्रेशन, या फिर कोई मतलब बदतमीजी के साथ नहीं कह रही है और फोर्सफुली भी नहीं कह रही है, पर वो बार बार उसको टर्न डाउन कर रही है
किसी ना किसी बहाने से, तो समझ जाना चाहिए कि दैट बिहेवियर इज अनवेलकम। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर कोई इस तरह का अनवेलकम बिहेवियर होता है तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। देन इट शुड बी सेक्सुअल इन नेचर। इट मीन्स कि जैसे मैम ने पहले बताया था कि फिजिकल, बिकॉज टच उसके अंदर आता है, तो एवरी फिजिकल टच इज नॉट सेक्सुअल। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं या फिर उसको हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस तरह की इंक्वायरीज को अटेंड करते हैं, so the IC members have a very good understanding of that कि every physical touch cannot be sexual। ये शांता कुमारी वर्सेस सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का केस है कि जिसमें द लेडी वाज वर्किंग इन ए लैब और जो उसका सुपीरियर था ही वाज अ मेल, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो अग्रीव्ड है, जो पर्सन है, दैट कैन बी ओनली ए विमेन। तो विमेन ही हो सकती है, पर जो कंप्लेन है या रिस्पोंडेंट है उसके किसी के खिलाफ जो है वो मेन के खिलाफ भी हो सकती है और विमेन के खिलाफ भी हो सकती है। तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस ऑलवेज कि जिसमें एग्रीव्ड विमेन इज ऑल्सो इज ओनली ए विमेन। तो सेक्सुअल इन नेचर का मतलब है कि उसमें जब वो लैब में काम कर रही थी तो उन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ एंड द मैन शी ही ग्रैब्ड हर बाय हर आर्म एंड ड्रैग्ड हर आउट ऑफ द लैब। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस बना, तो उसके अंदर हुआ कि या ही टच्ड मी फिजिकली। पर जब कोर्ट के अंदर ये केस गया तो वहां पर ये ओपाइन हुआ कि नहीं, एवरी टच इज नॉट सेक्सुअल। तो ही हैज नॉट टच्ड यू दैट वाज इट वाज नॉट सेक्सुअल इन नेचर। तो यहाँ पर सेक्सुअल इन नेचर इसको डिसाइड किया गया। देन अगेन द वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव मीन्स कि आपकी इंटेंशन क्या है ये मैटर नहीं करती है। समटाइम्स because bringing and brought up of every women is different। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही तरह से आते हैं। some women are very comfortable if you just call them यार, ऐसे बोलते हैं, या फिर आप मतलब जिस तरह की बातचीत करते हैं, even shaking hands also। तो पर कई लोग जो अपनी किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो उनका फैमिली बैकग्राउंड है या रिलीजियस है, तो आपको ये ध्यान रखना है करते हुए कि आपका जो है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। आप नहीं कह सकते मेरा ऐसा इरादा नहीं था या मैंने ऐसा सोचा नहीं था। ओके, तो ये भी डॉक्टर पुनीत के सोनी वाला केस था। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि सब्जेक्टिव होगा। जो आईसी मेंबर्स होंगे या कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट है वो इस हिसाब से नहीं देखी जाएगी कि रिस्पोंडेंट क्या कहता है उसके बारे में या वो क्या सोचता है। इफ द विमेन इज राइट कि उसको ऐसा लग रहा है या उसको ऐसा महसूस हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट हो सकती है। then again the last point is very important, impact not intent। आपकी मर्जी क्या है या आप कैसा सोचते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस में ये होता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने इस हिसाब से नहीं बोला था। तो ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंटेंट क्या है वो आपका डिफेंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दीज आर द 3 फॉर्म्स। you can because it is animated तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, no problem। तो first one is physical। physical में of course touching, standing close, even आप किसी का रास्ता रोकते हैं और बार बार आगे आ जाते हैं, though you are not touching anyone, but फिर भी अगर इस तरह की एक्टिविटीज हैं तो उसको भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की फिजिकल इसमें ये फॉल करेगा। देन द अदर वन इज वर्बल। वर्बल में आपकी विस्लिंग भी हो सकती है, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं पर बार बार में अगर आप सीटियां बजा रहे हैं अपनी जगह पर बैठ के, इवन स्टेयरिंग ऑल्सो, यू आर नॉट टचिंग समवन, यू आर नॉट सेइंग समथिंग, तो वो नॉन वर्बल में आ जाएगा जो थर्ड वन है। तो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो वर्बल या फिजिकल ही हो सकता है, वो नॉन वर्बल जो थर्ड कैटेगरी प्लीज एक बार कर देंगे तो वी कैन सी दैट। या नॉन वर्बल, तो वो नॉन वर्बल के अंदर भी आ जाएगा कि आप किसी का पाथ ब्लॉक कर रहे हैं अनवारंटेड, या ऐसे जैसे कई बार होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो यू जस्ट लीनिंग ऑन समवन्स चेयर और समथिंग लाइक दैट। सो दीज काइंड ऑफ ऑल जेस्चर्स, ऑल बिहेवियर that amounts to sexual harassment। The next slide please। These are some of the data we are having, I have gathered rather a lot of data on different research that has been done कि 55% जो cases होते हैं वो sexually suggestive comments और jokes होते हैं। आजकल WhatsApp का जमाना है, ऑनलाइन है, तो हम क्या करते हैं कि बिना किसी भी मैसेज को पढ़े हुए हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सारी ईमेल्स इस तरह की होती हैं। इफ यू आर सेंडिंग समवन ईमेल filled with poetry or something like that, तो आप कहेंगे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ पोएट्री
की है, बट अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी भी बिहेवियर को बार बार रेपिटेडली कर रहे हो और दैट इज अनवेलकम, तो इसके लिए आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। ऐसे ही इंट्रूसिव क्वेश्चंस हैं किसी के बारे में भी, किसी के बारे में कमेंट्स हैं, इवन आप उसकी सामने नहीं कर रहे, आप उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, इवन दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। और ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो कोलीग से आती हैं, सुपरवाइजर जो सुपरवाइजरी मतलब आपके बॉसेस हैं उनसे आती हैं, इवन लाइक जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी कई बार आ जाती हैं। तो दीज आर लाइक ग्लिम्प्स ऑफ द complaints. Next slide, please. These are types of sexual harassment. That is, first one is quid pro quo. That is this for that. कि अगर if I am forwarding my sexual demands, तो अगर आप उसको पूरा कर रहे हो तो आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे हम दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे थे तो उसके अंदर होता है कि आपको बड़ी इजी ड्यूटी आवर्स मिलते हैं, आपको पोस्टिंग्स आपकी मर्जी की मिलती हैं, या फिर अगर आप नहीं मानते हो या जो है आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर जॉब के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट मिल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो क्यो। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, द नेक्स्ट वन इज हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। कि अगर मैं जो आपसे चाहता हूं, चाहे वो वर्बल है नॉन वर्बल है, तो जिसी भी तरह की जेस्चर्स से मैंने आपको बोला है, अगर आप इसको नहीं सुनते हो एंड यू आर नॉट एडियरिंग टू माय रिक्वेस्ट और यू आर टर्निंग डाउन इट, तो उसके लिए फिर आपका जो इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझे, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। कई बार होता है कि ज्यादा काम मिल जाता है, कई बार होता है ग्रुप एक्टिविटी से आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है फॉर वो आपके जो है एबिलिटी पर नहीं होती, बट बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, तो उसकी वजह से उसकी सारी चीजें जो है वो उसी तरीके से देखी जाती हैं। तो ये जो इस तरह का इंटिमिडेटिंग या ऑफेंसिव वर्क प्लेस हो जाता है, तो ये वाली जो चीजें या ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट है, दैट इज रियली वेरी डेंजरस एंड टॉक्सिक फॉर द वर्किंग एनवायरमेंट। Because I always say that as women we have to we have to walk extra mile for getting our jobs, because we have all our responsibilities as mothers, as sisters, daughters, and we have earned these abilities with the same kind of, rather I should say that we have put in more efforts than as our male counterparts, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ सोसाइटिकल। अगर आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर हम ट्रेवल करते हैं तो यू कैन जस्ट सी दैट, यू कैन जस्ट फील दैट कि कितना ह्यूमिलिएशन है, एंड एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट एनफ कि उसके पास खुद के व्हीकल्स हों। तो गली के अंदर से निकलना इस तरह का, और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में बैठकर इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, बट व्हेन यू जस्ट वॉक आउट ऑफ द रिमोट एरियाज, so you can see कि women has to struggle और girls has to struggle a lot more। और ये जो एक्ट है जब हम शुरू करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मेन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके पास ये होता है कि व्हाई दिस वर्कशॉप फॉर अस, वी नेवर डू दैट, but you are brothers, you are fathers, you are husbands, and you are sons of the working women, so you must be having someone working at some place, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं कि माय डॉटर, माय वाइफ और माय मदर इज स्टेपिंग आउट ऑफ हाउस, तो वो वहां पर काम करने जा रही हैं, तो उनको वो सेफ एनवायरनमेंट तब मिलेगा जब मैं किसी और जगह पर जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मैं एक सेफ एनवायरनमेंट अपनी वर्किंग कोलीग्स को देता हूं। वी डोंट वांट एज वुमेन कि हम लोगों के साथ कोई बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट तरह का बिहेवियर हो, बट एटलीस्ट इतने स्ट्रगल के बाद जब हम एक जगह पर एक हम जॉब को लेते हैं तो वी वांट कि एटलीस्ट हमारे साथ एक समानता का व्यवहार होना चाहिए, सेम वे में हम लोगों को देखा जाना चाहिए जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं। बिकॉज नाउ विमेन आर आप ऐसा नहीं कह सकते कि विमेन आर गुड फॉर नथिंग, कि वो सिर्फ किचन के काम तक हैं। विमेन आर फ्लाइंग फाइटर जेट्स, they have gone to the moon, even मंगल तक भी गए हैं हम लोग, एंड इट्स
आप कह नहीं सकते कि ऐसा कोई काम है जो वुमेन नहीं कर सकती जो एक मैन कर सकते हैं। सो लाइक ये इस तरह का व्यवहार अगर आता है, बिकॉज वर्किंग प्लेस इज सच अ प्लेस जहां हम अपने घर से ज्यादा टाइम बिताते हैं, एंड वी हैव अर्न ये कैपेबिलिटीज टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा जहां आपका जाने का काम नहीं करे, मन करेगा, जहां स्ट्रेस रहेगा, वहां पर आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। सो द ओनली aim of the act is to give a working healthy environment to everyone, not only to women but to everyone. Next slide please. सो प्रिवेंशन, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो सारी ड्यूटीज थी उससे पहले, जो भंवरी देवी के इंसिडेंट से पहले इसको समझा जाता था। सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप इवन यूएसए की भी बात करें तो 1970s तक वहां पर इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। इवन वहां पर भी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बिकॉज दे ऑल्सो हैड द सेम काइंड ऑफ एप्रीहेंशन कि अगर इसको किया तो शायद केसेस की बाढ़ आ जाएगी, सभी लोग जो है वो सब इसी तरह के, हम काम नहीं करेंगे, हम सब ये सेटल करते रहेंगे। पर आज कम से कम भी 50 इयर्स हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओनली women जो है वो सेफ महसूस कर रही हैं, जो इस एक्ट का एक मुख्य उद्देश्य था। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर के ऊपर, ये दो पर्सन या दो एम्प्लॉयज के बीच की चीज नहीं है, ये एम्प्लॉयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फॉर्मुलेटिंग ए सेपरेट सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी एंड सर्कुलेटिंग द सेम टू द एम्प्लॉयज, तो जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के लिए जो उनके सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उसी के अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं कि ये उसमें आपके जो मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्ट में आ जाता है। देन जो नए एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं उनको भी प्रॉपर ये बात बताई जानी चाहिए कि दिस प्लेस इज सेफ फॉर वुमेन, नो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपके सर्विस रूल्स हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं, आप इन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पनिशेबल मिसकंडक्ट बना सकते हैं। देन मेजर्स और एक्शंस जो हैं वो मिसकंडक्ट में आप डाल सकते हैं। देन अगेन जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए फॉल्स कंप्लेंट, अभी ज्यादातर लोगों को यही एप्रीहेंशन होती है कि फॉल्स कंप्लेंट होगी, पर इस वे में दिस ये एक्ट की एक बहुत अच्छी खासियत, अच्छी बात है कि इसके अंदर फॉल्स कंप्लेंट अगर होती है तो उल्टा जो है, आप जो वुमेन है जिसने भी कंप्लेंट की है उसके खिलाफ भी हो सकती है। और ऐसे इंसिडेंट्स हैं काफी सारे, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, बहुत सारे केसेस में होता भी है। बट देन अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत थिन सा डिफरेंस है फॉल्स कंप्लेंट में एंड कंप्लेंट नॉट प्रूव्ड में, बिकॉज दीज काइंड ऑफ बिहेवियर्स एक्चुअली ये सब होते ही आपके विद इन वॉल्स है। आपके पास ना तो विटनेसेस होते हैं, ना आपके पास एविडेंसेस होते हैं। तो इस तरह की चीजें प्रूव करना समटाइम्स मुश्किल होता है, पर प्रूव नहीं हो पाई कंप्लेंट और ये फॉल्स है, दोनों में काफी डिफरेंस है। सो द आईसी मेंबर्स हैज टू बी सेंसिटाइज एंड ट्रेन्ड इन द वे कि उनको वो ये सब समझ आए। नेक्स्ट स्लाइड। आईसी जो है इंटरनल कमेटी, ये बहुत एक अहम रोल इसमें अदा करती है। अभी मेरे बाद सर आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे कि आईसी का क्या रोल है, इसके क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। सो आई वोंट टेक दिस। नेक्स्ट प्लीज। अब जो पॉलिसी अगर आपने बना दी है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पॉलिसी इज देयर इन योर आपके पेपर्स में है, इट शुड बी ऑन योर वेबसाइट आल्सो। इट शुड बी पॉलिसी जो है वो आपकी सभी जो आपके मेंबर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके पास होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी हमारे पास है और इसके ये प्रोविजंस हैं। तो ये आप ईमेल, जो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन का जो भी आपका सिस्टम होगा उससे आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर जब मैं जाती हूँ तो वो बोलते हैं या ऑफ कोर्स वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस, बट जब उनसे पूछते हैं आपकी वेबसाइट पे है क्या, आईसी मेंबर्स के नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर्स, क्योंकि अगर आपका एग्रीव्ड कोई कोई है, आपके पास कंप्लेंट आ जाती है, तो वो कहाँ जाएगा अगर उसे पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप एचआर के पास जाओगे उससे पूछोगे, नहीं, उससे पहले ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दीज कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशंस। अब अवेयरनेस सेशंस क्या है कि आप खुद भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्योंकि अभी ये बिकॉज इट्स वेरी न्यू लॉ, इसके ऊपर आपको देखेंगे कि बहुत कम लिटरेचर हमारे पास है। एंड
कोर्ट्स के पास जो जो आपके इंटरनल कमेटी के अंदर मेंबर्स ये केसेस होते हैं उसका तो पब्लिकेशन है ही नहीं, और जो कोर्ट तक केसेस चले जाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इसीलिए इसके बारे में कि केसेस में कैसे कैसे हुआ है, क्योंकि बहुत माइन्यूट थिंग्स होते हैं जब हम एक बार इंक्वायरी करना शुरू करते हैं। सो आईसी मेंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी ये इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है। तो अगर कंप्लेंट पहले होता था कि सिर्फ कंप्लेंट आएगी उसके बाद इंटरनल कमेटी का काम शुरू होगा। नाउ जो इस तरह के अवेयरनेस सेशन है और जो आपके एनवायरनमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट को सेव करने का काम है, नाउ द इंटरनल कमेटी इज इक्विप्ड विद दैट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो आपकी जो आईसी मेंबर्स के लिए अलग से करे, आपकी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, आपकी सीनियर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, इसमें आपके सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लाइक ग्रुप ए है या ऐसा है, तो ग्रुप डी के मेंबर्स के लिए एम्प्लॉयज के लिए भी आपको उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की अवेयरनेस सेशन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। फेयर इंक्वायरी, जब एक इस तरह का कोई कंप्लेंट आ जाती है तो फेयर इंक्वायरी कराना भी आईसी जो है उसकी जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की तो है जिम्मेदारी कि वो इस तरह का आपको जो जो फैसिलिटीज चाहिए, आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, आपको जो भी आपको एक्सेस चाहिए, आपको कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, जो भी आपको चीजें चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराएगा। पर एक फेयर इंक्वायरी करना आईसी का भी लाइक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन द इनफेमस केस ऑफ मिस्टर पचौरी, तो वहां पर बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिमसेल्फ, तो जब वहां पर आईसी उन्होंने ही, बिकॉज अपॉइंटमेंट आप सबको मालूम है कि आईसी के जितने मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट आपका एम्प्लॉयर ही करता है। सो दो द इंटरनल जो कमेटी थी उसका अपॉइंटमेंट उन्होंने किया था, बट आई मस्ट शेयर विद यू कि उन्होंने बहुत फेयर काम किया। और जब उन्होंने अपनी जो इवन ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट कि इंक्वायरी के प्रोसीजर को किसी तरह से भी रोका जाए, उसको डिले किया जाए, बट दे जैसे सेड कि 90 डेज का पीरियड है तो विल डू दैट। तो उन्होंने बहुत फेयर इंक्वायरी की, और इवन द एम्प्लॉयर जिसने उनको अपॉइंट किया था उसी के खिलाफ उन्होंने, क्योंकि उस वाले केस में आप सबको मालूम है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो प्रूव हुआ था कि इट वाज डन। तो इस तरह की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो आईसी के मेंबर्स हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उन लोगों की पावर्स क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रोहिबिशन, जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब आपने योर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को मालूम है अगर हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है और ये मिसकंडक्ट में आता है, और इसके खिलाफ क्या क्या आपके आप जो एम्प्लॉयर है उसके पास क्या क्या पावर्स है कि वो क्या क्या कर सकता है, तो उन सबको ये चीजें होनी अब पता लग जाएंगी। तो दिस वर्क्स एज ए डेटरेंट टू द अदर्स, जो बाकी लोग हैं उनको पता होता है कि आप जब सेंसिटाइज कर देते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं, तो ऐसा होता है समटाइम्स जो हमारी एप्रीहेंशन है कि केसेस आते हैं, बट केसेस आए ना उसके लिए आप एक टॉक्सिक माहौल बना के रखो, अनहेल्दी माहौल बना के रखो, लोगों को एनकरेज ना करो, विमेन एम्प्लॉयज को क्या बोलो ही ना इसके बारे में, इसके बारे में बात ही ना करो। मैम सब जगह पर होता है, तो सब जगह पर होता है डजंट मीन कि हम लोगों को भी इसको चुपचाप करना सहना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू टेक वन स्टेप। तो अभी आप सभी ने एक छोटा सा एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा, कि आप सभी को मालूम है कि अभी कोविड की वजह से वी हैव बीन वैक्सीनेटेड, आप सभी होंगे यहाँ पर। तो जब वो लगाते हैं वैक्सीनेशन तो सभी को मालूम होता है कि हमें प्रॉब्लम होगी, सिम्टम्स होंगे, एग्रीवेट हो सकते हैं हमारे सिम्टम्स, बट देन वी नो कि उसके बाद हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। सो द सेम वे दीज काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं कि लुक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट अप्रोप्रिएट, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। और क्योंकि ये जो इस तरह की जो आईसी है या पूरा इस एक्ट के जितने प्रोविजंस है ना, ये सिर्फ है कि आपके 4 वॉल्स के अंदर रहने वाले हैं। तो ये जो आईपीसी के जितने प्रोविजंस थे जिसमें जाके लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था और जस्टिस मिलता नहीं था, तो उससे बहुत बेटर है। सो वी शुड वेलकम दिस, एंड हम लोगों को इसके लिए काफी सेंसिटाइज करने के लिए काफी काम करना चाहिए।
and making the law is not like only remedy कि भाई सिर्फ इसके करने से सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Rather we have to make it a habit कि अपने घर से शुरू करना चाहिए, because we have to sensitize our children कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहीं से लोगों के मन में अगर नहीं होगा घर से ही, तो वो बाहर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड देन वर्क प्लेसेस पर भी नहीं होगा. सो वी हैव टू लाइक वर्क स्टार्ट वर्क फ्रॉम आवर होम ओनली, जहां पर हम अपने बच्चों को ट्रेन करें कि इस तरह के जो बिहेवियर हैं दैट इज नॉट वेलकम. बिकॉज आई हैव वर्कड इन न्यूजीलैंड आल्सो विद द लॉ फर्म फॉर 2 years, आई स्टेड देयर. तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर जो बच्चे हैं उन लोगों को ये सारी चीजें स्कूल्स में सिखाई जाती हैं. व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज वेलकम, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट वेलकम. सो दे आर सेंसिटाइज्ड एनफ कि वो आगे जाके भी, ऐसा नहीं है वहां पे भी जीरो मतलब पॉलिसी जीरो केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं. सो हैंडलिंग कंप्लेंट्स सेंसिटिवली, दैट इज आल्सो लाइक प्रोहिबिशन. देन फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट्स, that is also like one of the major things that we have to take care. So thank you very much. Thank you, ma'am. You have explained in detail what is actually sexual harassment, work environment, and और आपने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए जिससे कि जो जानकारी आप देना चाह रही थी उसको सरल भाषा में जो हमारी ऑडियंस है उसको समझ में आए. So thank you very much, madam. Now I invite Mr. Jasbir Singh Bajaj. Sir is a retired IAS officer of 1987 batch of Tamil Nadu cadre. He is holding 5 master's degree, including 2 in law, 2 in management, and MA in public administration. He is a luminary in the field of law and management, and he's presently managing 2 law firms, KD Lex Chambers LLP, dealing in ADR and legal intellects, dealing in legal advice and due diligence as managing partner, with a vast experience of working in various aspects of public policy. I request sir to give his address on the topic of functions of internal complaints and committee, internal complaints committee and local complaints committee. Welcome, sir. Thank you very much. I'm really very grateful to the officials of Ministry of Justice for organizing such a webinar, interactive session. In fact, my 2 speakers earlier to me have spoken at length about this a very difficult and a very burning problem, which almost every one of us at one point or the other has been going through. I remember in 2017 when I was the principal resident commissioner in Tamil Nadu House, Delhi. That time, this Me Too had just cropped up. It was not that the sexual harassment was not happening or was not being reported, but perhaps that was the first time when it blew up like anything, and almost it became a very unfortunate talk of every for at every forum. That time I sought an appointment and called on the honorable Minister for Women and Child Development, Madam Maneka Gandhi ji. And I said, ma'am, your ministry is the nodal ministry, and I think we must do something. She said, what do you suggest, Mr. Bajaj? I said, ma'am, first thing is there has been a total lack of awareness, as Sunita has also mentioned at length. So she said, okay, can you contribute? I said, ma'am, I am in service, but yes, we were classmates in law. And from that day onwards, in 2012, when we finished our law degree from Delhi University evening classes, so I said, you start this forum of legal intellects and let's concentrate on this particular problem in addition to other legal issues. And I went on to do my LLM from ILI and all other, legal this thing. So we both then convinced then minister that we should have a panel of experts who can create this awareness. And it's not only, as she said, merely having a law is not sufficient. The law, first thing is the law must have proper teeth.
It should act as a deterrent, not only let the thing happen and then go for the sanction or the punishment part, but it should act as a deterrent. Prior to this, of course, there was no legislation on this, only Vishakha guidelines, and Vishakha guidelines, as she explained, without much of sanction. Yes, they had the force of law because the guidelines were from the Supreme Court, the apex court. But yes, a lot of things were still left. And then after a long period in 2013, from 1997 to 2013, we got this act. And but then rules framed thereunder, and that subordinate legislation and all this. Even now, if we see, though the law mandates that every organization having 10 or more people should have, earlier it was called ICC, Internal Complaints Committee, and then from 2016 it became IC. So I told the minister, I said, ma'am, I don't think even 10% of the organizations are complying with the provisions of this law. He said, then we should do something. I said, yes, immediate thing. If you see on your screen, we started with the slogan, "We won't." This was in reaction to Me Too. Now, "We won't" is a pledge from both the genders, from women that we won't tolerate, and the men we won't do it. So, in every workshop or interactive session, wherever I go, I make it a point that all the participants at least take this vow. When we finish the program, we should have a commitment towards our society, towards our fellow colleagues, towards everybody, that, I mean, whether unfortunately in unorganized sector, there's hardly anything. Yes, we have a distinguished member from local complaints committee. I think she'll be able to share some of her experiences with respect to the unorganized sector. But for the organized sectors, the establishments, we must have an internal committee in place. First, of course, is the policy, and should be well published policy. I mean, it should be known to each and every employee of the organization, not only the employees, but even those who are visiting the organization. They should know that this particular organization has got a healthy environment, working environment, and that will only attract the not only the customers but best of the talent also for the organization. If there are complaints coming from any organization, then I think even, I mean, any right thinking person will have a second thought about joining that organization. So to attract good talent, to retain them, to increase productivity, all these factors depend on this very, very important issue. So it's not a small thing that we are, I mean, you are doing a great service. Kudos to the officials of the Department of Justice that you are taking up this, you know. Now, I'll just go through because the constitution of internal committee members, their how the complaint is made, who can make the complaint. See, it is not only the employee who is the sufferer or the victim who can make the complaint, and that's, in fact, that's an unfortunate part, that most of the persons who have undergone this ordeal, they do not come forward to complain. रहने दो, छोड़ दो, क्या ये होता है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, ध्यान मत दो, इस तरह का होता है. I mean that, because one thing is, she is also afraid of the stigma attached to that. That's very unfortunate. In fact, instead of having empathy towards the victim, we start laughing at her. And that's a very, very bad attitude on part of every one of us, and we must admit to that. So first thing,
if we have a system in place in the organization, second thing is the sensitization of each one of the member of the organization. And a well-trained IC, why I have taken up this IC issue is that they lack that training. They do not know how to go about it. See, in Dibrugarh, a couple of years back, I retired in 2018 December. I took VRS from IAS to concentrate, I mean, devote my, services in this sector, legal sector. In fact, I am also having a IAS coaching institute where I coach IAS aspirants on law subject, law optional. Now, the IC constituting the IC is one thing which is missing in most of the organizations. Second, proper IC as per the provisions of the Act. I'll not take you through each and every section. That's not my purpose. My purpose is to make you understand as to what are the issues, what are the problems involved with respect to internal committee. The first is, of course, not many of the organizations are having IC in place. Second, no proper constitution. They do not know even. About 2 years back, just before the pandemic, we got a sudden call from a very big PSU, both of us, and we were asked to fly down to that place in Assam immediately. The next day morning, we went there. And when we landed up, we had a discussion with the top management. They said, ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हो गया है, पर हमारे पास तो कोई आईसी हमने बनाई हुई है. मैंने कहाँ बनाई है आपने, दिखाइए. तो देखा तो I said it's not proper. You don't have an external expert member. You do not have a woman as chairperson. And the 50% of the members have to be women. So then they said, please do it for us. I said, okay, no problem. We constituted the IC, had a sensitization program till late in the evening, and next day, hearing was conducted. Of course, she became the expert member temporarily for that particular incident, and the matter was resolved to a large extent. So then we came back. But this is one thing where I think each and every organization has to, you know, concentrate on that. Second thing, which I think we can go through the slides, please. Yeah. So this is a redressal mechanism, but she has, addressed this the prevention part of it and the procedural part. But I am looking at the redressal when the incident has already occurred. Then what kind of how we can sort out the grievance of the victim. Please, next, please. Yeah. A little fast, okay? So internal, it is constituted through a written order. The functions are basically to, spread awareness among the employees that yes, there is a redressal mechanism in place. So in case any unfortunate incident happens, you must know where to go and how to go about that. Next, please. So this is the section which says that senior employee has to be the presiding officer, the constitution of the committee. So next, please. Yeah. Because we'll leave this material here with sections and other things. I don't feel like going through the word by word. Yeah. So main thing is about the who can make the complaint. It's not only the victim, any other person, but with the consent of the victim, because it's her own privacy which is involved, and because of that reason, most of the victims are not coming forward. They do not want to compromise on the privacy because of the unfortunate
stigma attached to that. So these are some of the, I mean, if a woman is no more than with the consent of the legal heirs, these are all legal terms which I don't want to go into, but I'll concentrate more on the, yes, please. Yeah. So what should the complaint have? This is important because if anybody is making complaint, at least some essential factors have to be covered, which have to be considered by the members of the internal committee to reach a decision. Okay, so this data, the timing. Now, as Sunita has said, that it's very difficult to get the eyewitnesses or any other kind of direct evidence. So it has to be circumstantial evidence. So that's again a very difficult task. For that, I always recommend three things for the IC, which will come perhaps in the next slide, please. So these are do's and don'ts. No, I didn't see the basic thing is the IC doesn't follow any set procedure. And wherever the procedure is not mentioned under any law or rules or any statute, we have to go by principles of natural justice. That means you must hear the other party, RD altem partem. Then you should not be a judge of your own cause. That means if you are the respondent, you should not be sitting on the committee. So these are some of the things which have to be looked into by the IC. Yes, please. Next. So this is the process they have to follow. I said that both the parties have to be heard. The complaints committee has to go into the detail, the evidence, and wherever possible. And the most important part is the confidentiality. They should never, never, compromise on the confidentiality part and never disclose the names to of both the parties. It can go either way. The charges might get proved or might not get proved. So in case the charges are not proved, it comes on the man also. So it has to be a very, very balanced approach. Yeah. Yes, please. So now I think that slide, I don't know where, but yeah, I wanted to go to this. That was at the beginning. Acha, okay, now one slide which is not there, but I'll tell you there are three things which are very important for all the members of the IC. One is they have to be properly skilled. The skill comes through only by way of awareness training programs, which we conduct that. Second is their capacity to be a member of the committee. Capacity means, they should not be connected with either of the parties. If they find any connection, maybe relation, friendship, they must recuse themselves and, bring it to the notice of the management that this is the problem. And the most important thing which I just referred to was the empathy. No sympathy, but empathy, yes. Empathy to both, not only to the women, to both, because stakes are very high. And there can be, yes, next one, yeah. Next, please, yeah. So how the reporting system is already there. Now, I have prepared a checklist. Can you, yeah, that it is a checklist which should be given to all the members of the committee, and they should, go by this, and none of these points should be missed out. This is very important because otherwise the sanctity of the, inquiry will get suffered. Yeah, next, please. No, this is over.
Yeah, yeah, it is. There are number of points. So now, this is for the local complaints committee, which is mainly for the unorganized sector, where like even the maid servants working at our home, or those who are like daily laborers like that, they are also under the within the purview of this act, for which LCC is there at the district officer, district magistrate. Now, a problem comes here. I have been a district magistrate myself, collector in 2 districts of Tamil Nadu. Collector does not get time for all these meetings. Let me be very, he is, chairman of at least more than 100 committees. And he doesn't get time for, even conducting the essential meetings also. In addition to law and order and other, duties which he has to perform. So this takes a back seat. I have personally felt this, unfortunately. Though when I was collector, this act was not passed. I was in 2001 and 2. So this act came in 2013. But even when the complaints come, he cannot react as to what to do. So the LCC has to be very, very strong. The other members have to be very active, rather proactive, I should say, because to get a maid servant to make a complaint is the most difficult thing. You can expect a complaint from educated, well educated, serving employee, but to get, अरे उसको पता है उसके पेट पे लात लग जाएगी next day. I mean, तो वो सब देखने जो है ना, और बदनामी अलग से होगी. These two things are, so I think there ma'am will be able to throw some more light on that. So next, please. So this is the LCC. Yes, you can pass it over. Yeah, next one, please. So again, the LCC. So friends, I conclude my session with these remarks, and again express my gratitude to all of you for giving me a patient hearing. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत ही अच्छे से कंप्लेंट कैसे करना है, कंप्लेंट कमेटी के क्या रोल्स हैं, कैसे हैंडल करना है उनको कंप्लेंट हम सबको समझाया. और टॉपिक वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कमिटीज़ के लिए, वो काफ़ी मतलब आसानी से नहीं की जा सकती. अवेयरनेस क्रिएशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस सब के लिए. And now I invite Dr. Ruby Makhija, Chairperson of the Complaint Committee, District South Delhi, Government of Delhi. Madam, we are very thankful to you for accepting our invitation, even though we had finalized our agenda about a week back, but when we called you and you are accepted this, so we are thankful to you. We'll be now listening to you to share your experiences as a chairperson of the committee and how you handle the cases, and how we all will be benefited from it. Thank you, madam. Please come. Thank you so very much, esteemed members. I must start by thanking our Department of Justice for having me over. And secondly, Honorable District Magistrate South, who's given me this opportunity, rather I would say a responsibility to head the committee. I've heard all the speakers, and my personal experience with handling, we have an ongoing case. I'm not from the legal background. I'm a doctor by profession, and certainly it truly helps if you have a legal person in the committee. We do have, though she's not placed in Delhi right now. And without a legal person in the committee would have been very difficult for me also to have proceeded. Certainly I'm an activist. I know I'm very sensitive to the cause of women, but law is something which strengthens everybody's hand. So it defines our boundaries, it defines our working, and otherwise everything would have been very loose and very fluid. My personal observation from this case, firstly talking about this case, it's not just about the victim, it's about the witnesses also. Very difficult to get proper information.
unbiased information from the witnesses, which probably most of the times belong to the workplace. So getting them into the loop, especially when things are not related to them, the matter is, and generally in our community, in our society these days, what is lacking is being sensitive. Had we all been sensitive, we wouldn't have been sitting here and discussing this issue. There used to be something called a community, a samaj, and when we were kids, uh, things never came up to this level, and sadly so it has. It's mainly because we are absolutely missing sensitivity. And there, rightly, madam mentioned that she's worked in New Zealand, and she could see that upbringing, your the values, the culture which you provide uh, to children matters a lot. So, I mean, I don't know, for some odd reason, we try and push sexual issues and sexual matters and sexual education. We still consider, most of us literal people also, the ones who are outside this conference room, I can really say this with certainty. We are ashamed to talk about the issue. We'll have to leave that aside. That is a big stigma which we need to overcome. So community building and community strengthening is something we truly all need to work upon. Apart from looking after the interests of the victim, I would like to emphasize once again that witnesses also have their problems. They still continue to work at the same place. They're working under the same employer, and at times working under the complainant, under the respondent. So there has to be a mechanism in place whereby the interest of the victim is also taken care of. And since my own forte is community engagement and community building, I would want to stress upon the need and a system whereby, apart from these committees, how can we strengthen our own community so that, I mean, once the community uh, is sensitive to such issues, the burden, I won't say a burden, but certainly the number, and so far as you all rightly mentioned, I mean, I don't have the numbers, but hardly any cases are reported to either the internal committee or to the local committee. Another input which and suggestion which I have is, like we said, that internal complaint, now it's gone from internal complaint committee to internal committee because now we believe in preventing. So similarly for the local committee also, I think we can have some proactive programs whereby we interact with the local areas where we are placed in the district, and the basic information, like I am not sure how many people are aware that such committees exist, and there is a system in place whereby the women, though to no matter which strata she belongs to, can ask for support. So that information seeping down to the grassroots level is something which has to be put in place. And very well said by sir that the district magistrates, of course, their hands are so full, and I must compliment them that despite so much of work, whenever we've contacted them for help or assistance or guidance, they've taken out time without putting the matter aside. So strengthening of local committee, proactive definition of roles and programs for local committees so that we are able to interact more with people like DM. We can't expect them to be on the roads talking to the common community. So engagement of the local committee with the community is something which we can work upon and improve. Des, thank you so very much for having me over, and I'll be more than happy in case you want to take it forward with me. Thank you. Thank you so much, madam. You have rightly said that the sensitivity which was there in earlier times is missing, and to make people aware about the provisions of the act and the mechanism of redressal, we need to strengthen the community building. And of course, we will be getting more inputs from you in the days to come to make our awareness programs successful on these issues and other issues. Now, I will ask
Ashutosh to take up the session of question and answers if we have. Of course, we have exceeded the time of our seminar, but we'll take up a few questions if they are. थैंक यू सर। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं फील्ड से, इंडिया के रिमोट पार्ट से। उनके सवाल हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिन जिन विषयों पे अभी बात हुई है और आपके सवाल हैं या आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज अपने अपने सवाल को रखें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एक बार और अपने सवाल को रखें। हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टाइम आपका है, आप अपने सवाल रेज करिए प्लीज। Good afternoon, sir. Good afternoon. Please. This is I'm Gonampul from Arunachal Pradesh State Legal Services Authority. So I have a question regarding the internal complaints committee. So can the contents of the proceedings of the committee be made public for transparency? They are not to be made public because of I told you, the confidentiality involved in the proceedings, particularly with respect to the parties involved. So it is not advisable to, unless the matter reaches the finality in the form of acceptance of recommendations of the committee and the action taken finally by the management with respect to the defendant or whosoever is found guilty. Till that time, it should be kept confidential. Yeah. Right. Thank you, sir. Can I? अगले सवाल के लिए मैं बुलाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, अपना आप कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि हम लोग भी आपको देख सकें। अगला सवाल जिसका जो भी पूछना चाह रहा है इस विषय पे। Can I? ये प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए आप। मेरा कैमरा ऑन नहीं है। यहाँ से अलाउ कर दीजिए। Advocate Suhaila Ali from UT of Jammu and Kashmir. I'm a partner with Telelaw, sir. Being an advocate, although everything is clear now, the speakers have had such an enlightening session, I would add here that as an advocate, I have seen women who don't even realize that they have been subjected to sexual abuse, be it physical or especially verbal abuse. Because in some of the cases, the co-worker or their boss, they, for example, they offer lift to the women. So she doesn't realize that that person, he has an ill intention, but the woman doesn't realize that also is a part of sexual harassment. Because I had a case, without naming her, the women told me that her co-worker, he used to wait outside the office, and when she came out after the office hours, he used to offer her lift to the sumo stand. And then she told me that once he told me that I'll drop you at home. So that act of the co-worker, she felt very uncomfortable with that act. She told me that, what can I do? I said, you report to your head of the department. She said, no, we don't have any committee there. So here I would like to add that here comes the importance of providing education and information about the physical harassment of women, sexual harassment of women at workplace. Women are not well aware about the internal committees. They have no information that they are being protected by workplace harassment laws. So we need to make them aware, sir, and that awareness should be on regular basis in the offices, in the institutions where they are working. Most of the women, they have no information, although they feel that the act which is being committed against them, that makes them feel uncomfortable. They said that नहीं, इसका तो ये routine ही है, सबके साथ ऐसा ही है, तो मेरे साथ भी इसने यही कर लिया. But they don't know that they have a committee in their office where they can approach. They don't have any information
as to where to approach, who is the authority to whom they can approach. So in that case, I would like to say that information and education or awareness sessions be held on regular basis, and that too to all the staff members, so that they can get well versed about the laws. Thank you, sir. थैंक यू। अगला मेरे ख्याल से हम लोग देख नहीं पाए। एक और सवाल कोई पूछ रहा था। Please, member secretary, sorry, let me introduce you. Sir, we are implementing a program in Sikkim, and they're focused on 3 laws. This law, sexual harassment of women at workplace, another is protection of women from domestic violence act, and anti-human trafficking also. So, and she's mainly working with SHG women. They are from unorganized sector, and what kind of, and she's organizing series of training programs for them, and what kind of responses you get. Ma'am, you're welcome, and please share your experiences of this program. Thank you, sir. So far we have organized since October last year, signing the MOU with the ministry. We have organized 6 programs, and we have also organized programs for self-help groups, college students, and school students. Now, right now, we also have conducted a talk show on POXO also, and also sexual harassment at women at workplace, where we had more than 33,000 viewers online, and we had 33,000 for POXO talk show viewers. So my question here would be, though we are conducting lots of awareness program, reaching out to the grassroots level, but the problem of unorganized sector, informal sector, domestic workers, helpers, we are not getting cases from them. Now, the reason what we feel is they are too scared to open up, because at the end of the day, they have to go to the police through the local complaint committee. And we feel that they have this fear that they might be thrown out of their job, or they might have that social stigma where tomorrow they might not be placed in any work places. So this is one sector which we feel that unorganized sector and informal sector workers have this typical stigma in their head that, oh, we should not report, it will be will have an adverse effect on us themselves. So second thing is, last year we had notified regarding constitution of internal committee and local committee, and we have got 60 to 70% of compliance, and we are looking forward for 100% compliance. And we also would like to thank Department of Justice, Ministry of Law and Justice, because with their support we've managed to reach out to maximum areas, and in the coming to also we plan to do programs, sir. Thank you. Ma'am, I add, sir, they are from the Sikkim Women Commission. okay, Yes, yeah. Let me share with you my Sikkim experience, rather our Sikkim experience. We had an opportunity to have a training session, awareness session for senior police officers of Sikkim police. Most of them were lady police officers, and DGP himself, then DGP, was my batchmate, so we were there. And I myself had been a police officer earlier. I was a sub inspector in police, later on became inspector, so I know what problems generally are felt by the unorganized people, I mean, sector women, when they approach the police, even before this act came into being, and even before the Vishaka guidelines were issued. The only recourse available was under the provisions of Indian Penal Code of molestation, etc. And it was really very difficult. Even now we find it very difficult to approach the police officers. So in this case, though we had a sensitization program and the response was extremely good,
Even for Delhi police, as Madam has said, 80,000 police officers have been trained through their, portal Nipun. We had an online program, and every officer, right from constable to police commissioner of Delhi, had to attend that program. But still, we find it very difficult. So, in such cases, the local committee has to play a very important role. They have to take up their cases with the concerned police officers. If the things don't get settled at the police station level, then definitely at the supervisory level, SP and above. So, but what service you are doing, I have seen, we have got the feel of Sikkim personally, so I can understand the difficulties which you might be facing there. But SHG, if they are doing such a good work, they should be encouraged by the local administration also. और किसी के सवाल हैं? अगर कोई और अपना सवाल पूछना चाह रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन? Sir, we are not getting question. Then we can. Yeah. Good afternoon, sir. Sir, Please, good afternoon, sir. पूछिए अपना सवाल. हाँ. yeah, I have a question. Mom is great. Sir, Actually working on अपना सवाल पूछिए. Please ask your question or query. sir. Please share. Yeah. am I sir, audible? good afternoon, sir. I am Good. Good afternoon, everyone. I'm based actually working as project coordinator in NIMS Imphal. This is under the with in by JNIMS along with the DoJ. I just have one आपकी question. आवाज क्लियर नहीं आ What रही है. is time limit for next? What is the time limit for आप next? ऐसा करिए मैडम, अपना क्वेश्चन चैट में डाल दीजिए. And We will take it from there. जेनिम्स टीम अपना क्वेश्चन आप अगर टेक्स्ट कर दें good हमें. afternoon, sir. Please. Sir, good afternoon, sir. Is it audible, sir? Yes, you are audible. Please ask your question. Sir, I am representing Sado Advertising. We are actually shortlisted for DISA scheme for implementing partner for DoJ in the state of Orissa. Actually, I wanted to ask you whether the subject of sexual harassment and workplace related to migrant labor and tourist, because as you are aware that Orissa is a hub of migrant labor, and also most of the tourists come over to this place, and it has been noticed that they are also being sexually harassed as well as victimized on several occasions. So I wanted to just clarify whether this act will be the same model will be relevant for migrant labor or not. Yeah, whether any kind of like complaint or grievance redressal cell is there to whom they can approach. So, Hello. Yeah. So I got your question, but that I want to know further. Like you're talking about the migrant laborers and the visitors who are visiting your company or your premises? No, our state. No, your state, then, again, yeah, of course, everyone who is even a visitor, so if your Right. organization or maybe the place, then it if it happens in an open place, then the case would go to the local committee. Okay. If it is a hotel or a Okay, ma'am. resort or that kind of organization where 10 or more employees are there, then you have to have a complaint IC. Right, ma'am. Yeah, so that is the any and ma'am- women. Yeah. And what about, ma'am, migrant labor?
those who Migrant are labor working also, in like everybody is covered. Yeah, everybody is covered in this. Even you don't have to have it like, regular employee, even the visitors. If somebody is visiting your place, even if she has experienced some kind of harassment like that, then she can also make a complaint, of course. okay, ma'am. Thank you, ma'am. And Thank you, here, ma'am. yeah. Yeah. Ma'am, we have received a question from Manipur. What is the time limit for an aggrieved woman to give a complaint? Can the time limit be extended? It can be extended, but in certain cases, like, she has a valid reason for, like, what is the like reason for this delayed complaint. So if she is having a reasonable grounds, then the complaints jo hamari ICA internal committee, that they can consider it. Otherwise Initial time is around, it's three 3 months. months. Yeah. 3 months from the date of incident happened, and if it is a series of incident, कई सारे incident आप report करना चाहते हो, तो from the date of the last incident, तो उसके लिए 3 months जो है वो जरूरी है. बट अगर कोई इस तरह के रीजनेबल उसके पास ग्राउंड्स हैं जो वो दे सकती है कि मेरे को इसको फाइल करने में इसीलिए देरी हुई एंड द आईसी मेंबर्स आर सेटिस्फाइड, तो उसमें आप उसको कंडोन भी कर सकते हैं डिले को. Thank you, ma'am. And again, one more submission, like very humble submission I would like to make, कि इस एक्ट में कहीं भी victim नहीं है, because this she is a aggrieved woman. Aggrieved तो woman. victim जो है वो एक बहुत ही मतलब उस आप pedestal पर ले आते हो किसी को कि she doesn't have the authority or something like that. तो कहीं भी आप please use करें तो उसको Aggrieved. aggrieved women है, complainant है, but not a victim. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Hopefully जेनिम्स टीम ने सुना होगा अपना रिस्पांस. यहाँ पे एक डायरेक्ट So क्वेश्चन है. yeah, so we will have the last question now. Yes, yes. And yeah. Sir, if I may. Ma'am had made a mention of the hesitancy of witnesses to come forward and give their statement. And these cases, as already mentioned, it is more circumstantial and sometimes also more a matter of perception. And even when witnesses come forward from both sides, it's usually this one person say against the other. Now, when it comes to adjudicating finally, how do you adjudicate? What do you consider? What goes into taking a final decision on whether the charges are proved or not proved? Madam, can you kindly introduce yourself also? I am Advocate Ekta Mehta, practicing in Delhi. Yeah, a very valid question. It's indeed very difficult as chairperson of the committee and members also for us, it is difficult. But as in our committee, we have 5 different members. Okay, so it could be my perception. It actually depends on how the members of the committee also have perceived her statements. And it's not just 1 or 2 statements. At times, the cross-examination carries on for over an hour. So yes, certainly it is very difficult. Plus, moreover, there is a series of witnesses. It's not just one witness that we are banking upon. So it certainly is a tight situation at times. But as that's the whole idea of having a committee, not 1 or 2 people, but 5 people in a committee, then we sit down together and take a call on it. And just to add, she is our Nyaya Bandhu pro bono advocate. She has come first time to our premises. She is registered under our Nyaya Bandhu program. And also, it takes a lot of time to go through the entire case. Okay, so just if I talk about one witness, at times it's not very difficult to find out whether the actual factual position is, and thankfully, most in the case which we're handling now, if we feel that the witness is either concealing or not coming up with proper facts, there have been cases when there were other people also around, so you can make out, and certainly because both the sides give their own list of witnesses, so it becomes easy. Thank you, ma'am. So we will end up our question and answer session here because we are running short of time. Rather, we have exceeded it by almost an hour. So now I will request our Joint Secretary, Sir Shri Pravash Pashun Pandey, sir, for the closing remarks. Welcome, sir.
It's been a pleasure today to be part of this initiative of the Disha scheme. And it was really very, very enlightening. And it was a learning experience to go through to interact with all these esteemed panelists. And I'm quite sure that their views and their explanations and the PowerPoint presentations which they've made, they will go a very long way in spreading the word about this particular act on this Prevention, Prohibition and Redressal Act, which is a very, very important means of ensuring that a very strong part of our workforce remains comfortable and secure in their workplace. I would also like to express my gratitude to Shri Jasbir Singh Bajaj and Madam Sunita Suman for being part of this initiative. And also Anvita Sinha, Director Appointments, who is part of our own department, and also Dr. Ruby Makhija, who took time to come and address us here. On behalf of Department of Justice, I also express my gratitude to the CSC e-governance services, also all the A2J partners, and all other village level, all the coordination which has been done on their part. And I would also like to reiterate that it is the responsibility of every employer to sensitize their workforce towards the needs to uphold the dignity of women in the workplace and to do away with gender stereotypes. And I'm quite certain that this initiative will be a step forward in the right direction. Thank you so much for being part of this initiative. Thank you so much, sir. We will have a formal vote of thanks from Mr. Ravindra Pare. Thank you, sir. We already in very short of time. Just I need to wrap up in very short time. I just thank to our Joint Secretary, sir, Pandey, sir. I thank respected Speaker Shri Bajaj, sir. I thank to Sunita ma'am. Thank to Ruby ma'am, Dr. Ruby ma'am, and also I thank Director sir, my Joint Secretary sir, Neeraj Gyagi sir. Of course, he's not in this webinar, but he's always giving his guidance on this on support and guidance on this webinar. My secretary, my secretary sir, Barun Mitra sir, also I thank to him. He's also giving all sort of support in every aspect. I finally I thank to my all the participants who are attending this webinar, and also those who already joined from various part of the country through video conferencing. I really thank to all of them. Thank you. Thanks a lot.